Now, in today's class, we are going to discuss about the direct and inverse variation. Okay, तो देखते हैं डायरेक्ट एंड वेरियस इनवर्स प्रोपोर्शन में क्या है या वेरिएशन में क्या है, कैसे उसको सॉल्व करना है. सिंपल ट्रिक एंड टेक्निक्स आई विल टेल यू, and with that one you can easily go for it. Now students, please be mindful to understand the question. Okay, so if you will not be able to understand the question properly, then you will not be able to solve the question also properly. So to solve the question, you need to understand. The very first thing which you have to go for this one, that you have to identify that what is the question asking for you, and then according to that you will choose for the direct method, or you have to go for the inverse variation method. Okay, तो दोनों ही मेथड इजी हैं, दोनों ही प्रॉपर्टीज इजी हैं, बस थोड़ा सा समझने का है कि किस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है. अगर डायरेक्ट वेरिएशन या डायरेक्ट कंडीशन में अगर क्वेश्चन है, देन यू कैन जस्ट सिंप्लीफाई द क्वेश्चन विद द सिंपल यूनिटरी मेथड. जो सिंपल यूनिटरी मेथड तुम लोगों ने प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ा हुआ है, तुम अगर उसको अप्लाई करोगे, यू विल बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन प्रॉपरली. But if it is in the inverse proportion, then we have to go for little twisted way, but that will also go with that unitary method only. ओके, सो पहले तो ये समझते हैं डायरेक्ट वेरिएशन किस क्वेश्चन में होता है और इनवर्स वेरिएशन किस क्वेश्चन में होता है, या किस क्वेश्चन में हम लोग डायरेक्ट वेरिएशन कहते हैं और किस क्वेश्चन में हम लोग इनवर्स वेरिएशन कहते हैं. ओके, सो लेट्स सी एंड अंडरस्टैंड फॉर दैट वन. सो व्हाट वी कैन से फॉर द डायरेक्ट वेरिएशन. ठीक है, तो डायरेक्ट वेरिएशन किसको कहा जा सकता है? एक सिंपल लॉजिक समझते हैं. सपोज फॉर एग्जांपल यू हैड गॉन टू द मार्केट and you want to buy a pen. Okay, so the shopkeeper had said that the cost of one pen is 10 rupees. It is 10 rupees. And if suppose you want to go for two pens, then you have to pay 20. And similarly, if you will go for three pens, it will be 30. So you can observe over here that as the number of pens are increasing with one, you can see that the cost is also increasing by 10. So this is the basic logic. जिस तरह से मेरे एक साइड के क्वांटिटी इंक्रीज हो रहे हैं, उसी प्रोपोर्शन में या उसी रेशियो में मेरे दूसरे साइड के कंपोनेंट्स भी इंक्रीज हो रहे हैं. तो इस तरह का अगर सिचुएशन होता है तो उसको हम लोग कहते हैं डायरेक्ट वेरिएशन. ओके, तो फिर से समझो, अगर हम लोग देखते हैं कि मेरे एक साइड के क्वांटिटी में एक सर्टेन अमाउंट का इंक्रीज हो रहा है, तो दूसरे साइड के क्वांटिटी में भी एक सर्टेन अमाउंट का ही इंक्रीज हम लोग देखेंगे. नाउ इट इज नॉट नेसेसरी दैट ऑलवेज देयर विल बी इंक्रीज ओनली, इट कैन बी डिक्रीज आल्सो. वो वहां पर घट भी सकता है. सपोज फॉर एग्जांपल यू हैड गॉन टू अ पार्क, ओके, एंड देयर इज अ टिकट. Okay, so there is a ticket which you have to buy over there. So suppose for example there were 5 people. Okay, so for 5 people the price was has to be paid for 50 rupees. Says for 5 people it has to be paid for 50 rupees. Then if only 4 people will go, then how much would be the price? That is 40. And say as only 3 had gone, so the price would be 30 only. So you can see over here that as we are decreasing 1 and 1 from this side, we are decreasing 10 and 10 from this side. So it is going evenly. It is an even condition. As my LHS is decreasing, my RHS is also decreasing. So under that situation, we can easily identify that this system is of direct variation. यानी ये जो सिस्टम है या फिर ये जो क्वेश्चन है, ये हमको डायरेक्ट वेरिएशन को दिखा रहा है. तो फिर से अगर डायरेक्ट वेरिएशन होगा तो मेरे पास जैसे जैसे एक साइड में डिक्रीज या इंक्रीज होगा, वैसे वैसे ही मेरा दूसरे साइड में भी डिक्रीज या इंक्रीज होगा. ठीक है, साइमल्टेनियसली और एक दूसरे के साथ वाइस वर्सा करते हुए. बट इफ इट इज एन इनवर्स वेरिएशन, अगर वो इनवर्स वेरिएशन अगर हो जाता है,
अगर वो इनवर्स वेरिएशन के लिए है, then what does this means? Then it actually shows that if one quantity will increase, then another quantity will decrease over there. अगर एक क्वांटिटी बढ़ेगा तो दूसरा क्वांटिटी वहां पर डिक्रीज हो जाएगा. कैसे? Suppose for example, at your home some kind of construction work has to be done, okay, and the construction works will be done by laborers and workers. Different workers will be there. So see, as it's been estimated that if 10 people will work, then the whole work will be finished by 5 days. Okay, ये बोला गया है कि अगर 10 लेबर मिलकर या 10 लोग मिलकर अगर उस काम को करेंगे तो 5 दिनों में वो पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा. Now you just think it like this way, that if we will increase the number of people over here, then what will happen to the number of days? Or if we will decrease the number of people over here, then what will happen to the number of days over here? So देखो, अगर मान लेते हैं कि 10 लोगों के जगह पर वहां पर say as for example 12 people are going to come. So what will happen? My work will finish in 5 days. It will finish it less than 5 days, or it will take more than 5 days. So what it would be? Obviously, it will take less than 5 days. Okay, तो अगर 10 लोग मिलकर किसी काम को 5 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो वही काम 12 लोग मिलकर 5 से कम दिनों में उसे पूरा कर देंगे. Say as 4 days में ही मेरा काम कंप्लीट हो गया. Okay, so one side has increased and another side has decreased down. In the same way, if we go to the other side, अगर हम लोग 12 लेबर्स के जगह पर अगर हम लोग वहां पर 8 लेबर्स को बुलाते या 8 वर्कर्स को बुलाते, then what would happen? Then my work which has been estimated to finish in 5 days, it will take more than 5 days. It will take more than 5 days to finish the whole work, because the number of workers are less over there. So it may take 6 or 7 days to finish the work. So this kind of condition, when we observe that my LHS is increasing to that my RHS is decreasing, or vice versa, then that condition explains us inverse variation. वो हमको inverse variation बताता है. ठीक है? So you have to first identify that what kind of question it is, whether it is of direct variation or it is of inverse variation, and then only you have to take the step to solve that particular question over there. Now let's discuss about some of the questions, and with that one we will try to understand that how can we solve for these kind of questions and these kind of things. Okay, तो इस तरह की चीजों को हम लोग कैसे कंप्लीट कर सकते हैं, किस तरह से कर सकते हैं, उसको थोड़ा सा हम लोग समझने की कोशिश करते हैं. एक सिंपल सा क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं. सपोज फॉर एग्जांपल देयर इज अ पैकेट ऑफ पेन. ओके, सपोज देयर इज अ बिग पैकेट ऑफ पेन, एंड दिस पैकेट कंटेन्स 20 pens. This contains 20 pens, and the price of the packet has been given to you as rupees 280. ठीक है, एक पैकेट पेन है, यहां पर एक पैकेट पेन है, इसमें 20 पेन्स हैं. ठीक है, और इन सारे पेन्स का कॉस्ट तुमको दिया हुआ है 280 रुपीज. नाउ इफ द क्वेश्चन इज आस्किंग लाइक दिस, that if someone wants to buy 7 pens, only 7 pens, then what price that person has to pay? तो वहां पर कितना पैसा उसको पे करना पड़ेगा. So see students, as I said earlier, first identify what category of question this is. यानी वो किस तरह के क्वेश्चन में आता है, ये डायरेक्ट वेरिएशन के क्वेश्चन में आता है कि इनवर्स वेरिएशन के क्वेश्चन में आता है. तो सिंपल सी बात है कि अगर हम लोग किसी चीज को खरीद रहे हैं तो एक के प्राइस के साथ साथ
जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे क्वांटिटी बढ़ने के साथ साथ प्राइस भी इंक्रीज होता चला जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज होता है, जैसे जैसे क्वांटिटी इंक्रीज होगा वैसे वैसे प्राइस भी इंक्रीज होगा। सो ये डायरेक्ट वेरिएशन है। सो हाउ कुड वी सॉल्व फॉर दिस वन? सो वी विल गो फॉर लाइक दिस, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 20 pen price or cost to be, means say as cost to be rupees 280. So therefore 1 pen cost to be rupees 280 by 20. So you can cancel this one and this one. So when you will cancel for this one, so 14 times it will be cancelled. So then you can go for, therefore the price or cost of, therefore the cost of 7 such pens equals to 14 into 7. So just you need to multiply this one. So it will be rupees 98. So 98 rupees has to be paid for the price of 7 such pens. So this was a simple condition of direct variation where you need to use the unitary method to solve the question. जो तुम लोगों ने यूनिटरी मेथड का पैटर्न पढ़ा हुआ है, बस उसी पैटर्न के ऊपर तुम्हारा सारा का सारा सॉल्यूशन हो जाएगा इफ द क्वेश्चन इज ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन। ठीक है, सो आई होप दैट यू ऑल हैड अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव टू वन मोर क्वेश्चन, ओके, एंड देन अगेन वी विल डिस्कस फर्स्ट दैट वेदर इट इज अ डायरेक्ट or inverse, and then only we will go for the solution. Let's see, a simple question is there that it has been asked that 10 workers are there. Okay, so as I was giving that example, okay, so suppose 10 workers were there and they can finish the piece of work in 12 days. Okay, so they can finish the whole work in 12 days. Now suppose, for example, if it has been given that instead of 10, say as only 8 workers were working. Okay, only 8 workers were working. So in how many days the work is going to finish out over there? यहाँ पे कितने दिनों में ये काम पूरा हो जाएगा? So as I had said earlier, that in these kind of questions you will observe that when one side increases, then another side decreases, or vice versa goes on. If one side decreases, then another side increases. So this is a condition of inverse variation. So how would we solve? फिर से बता रहे हैं। अच्छा, फिर से बता रहे हैं। यहाँ पे बोला गया था, क्वेश्चन बोला गया था कि एक 10 वर्कर है, ठीक है, 10 वर्कर है किसी काम को करने के लिए, और वो 10 वर्कर उस पूरे काम को कंप्लीट करते हैं इन 12 डेज। वो 12 दिनों के अंदर वो पूरे काम को कंप्लीट कर लेते हैं। कोई कुछ काम है, उस काम को वो 12 दिनों में कंप्लीट कर लेते हैं। लेकिन सिर्फ 8 ही वर्कर वहां पर अभी काम कर रहे हैं, या 8 ही वर्कर आए थे काम करने के लिए। 10 के लिए बात हुआ था, लेकिन सिर्फ 8 ही वर्कर वहां पे काम कर रहे हैं। तो पूछा जा रहा है कि वो 8 वर्कर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। सो क्या वो लोग 12 दिन ही लेंगे उस काम को पूरा करने के लिए, उससे कम लेंगे, या उससे ज्यादा लेंगे? ठीक है, तो ये चीज हम लोगों को समझने की जरूरत है। सो there were 10 per workers. It been discussed for 10 workers, or it been assigned for 10 workers, that 10 workers can complete the whole work in 12 days, but only 8 workers are present to do that work. So in how many days that is going to finish out? वो कितने दिनों में पूरा होगा? So let's see and understand for that one. So let's see for this one how we can solve for this kind of question. So first of all, according to the question, 10 workers can finish a
piece of work in how many days? That is 12 days. Just a minute, it will be 12 days. ठीक है? Then therefore one worker can finish the work in, अब देखो यहां पर एक दूसरे मेथड में हम लोग चले जाएंगे, क्योंकि ये एक इनवर्स प्रोपोर्शन है। 10 वर्कर अगर काम करते हैं तो वो 12 दिनों में उस काम को पूरा कर लेते हैं। तो अगर सिर्फ एक ही वर्कर को काम करना हो तो उस एक वर्कर को बाकी सभी वर्कर्स के बराबर का काम करना पड़ेगा, तब जाकर वो काम पूरा होगा। सो इन हाउ मेनी डेज दैट विल बी फिनिश? You need to multiply that one, 10 into 12. Previously we used to divide. Okay, unitary method के बेसिस पर जब डायरेक्ट वेरिएशन में बता रहे थे वहां पर डिवाइड करना होता है, लेकिन यहां पर हम लोगों को क्या करना पड़ता है? यहां पर हम लोग को मल्टीप्लाई करना पड़ता है। Why? Understand the reason. Understand the reason. क्योंकि देखो यहां पर 10 वर्कर मिलकर 12 दिनों में काम पूरा कर रहे हैं, लेकिन अगर सिर्फ एक ही वर्कर को काम करना हो, सिर्फ एक ही वर्कर को काम करना हो, तो वो एक वर्कर 10 वर्कर के बराबर काम करेगा, तो वो कितने दिनों में काम पूरा होगा? सो दैट वुड बी 10 into 12. इंस्टेड ऑफ डिवाइडिंग वी विल गो फॉर मल्टीप्लाई। ओके, नाउ सो देयरफॉर इफ 8 workers are there to finish the work, then it will be finished in, वो कितने दिनों में कंप्लीट होगा? So that is 10 into 12 by 8. So you need to just divide this one. Okay, so 8 से हम लोग इसको डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पर अगर हम लोग 8 को उसको कैंसिल करते हैं, 4 से हम कैंसिल कर सकते हैं इसको 2 टाइम्स में, 4 से इसे कैंसिल कर सकते हैं 3 टाइम्स में, देन फ्रॉम 2 वी कैन कैंसिल दिस 10 फॉर 5 टाइम्स, सो इट विल बी फिनिश इन हाउ मेनी डेज? 15 days. So instead of finishing in 12 days, it is going to finish it in how many days? That is 15 days. तो वो 10 वर्कर 12 दिनों में कर सकते थे, लेकिन सिर्फ 8 ही वर्कर काम कर रहे हैं, hence it will be finished in more days, so it will take 15 days. Okay, so this is the inverse proportion. ये inverse proportion के बेसिस पर काम हो रहा है, या फिर inverse proportion के बेसिस पर यहाँ पर इसका कैलकुलेशन हो रहा है। So I hope you all are understanding till here. Is there any doubt or any problem till here? Then I will discuss some other questions also. Yes? Is there any doubt or any problem till here? Anyone? कोई confusion है तो बताओ? No? Okay. No. So then okay, then very good. Okay, let's see then we can go for some other questions. ठीक है, चलो कुछ और क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कि किस तरह से हम लोग इसको कर सकते हैं। तो थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन लेकर देखते हैं, ठीक है। Say as a very common question which we can see in the book also. यहाँ पर हम लोग को दिया हुआ है कि if the weight of 65 tea packets of a small size, same size is 26 kg. What is the weight of 25 such packets? ठीक है, हम फिर से क्वेश्चन एक बार रिपीट कर रहे हैं, एक क्वेश्चन ऐसे ही देख रहे थे, तो वहां पर हमको दिखा ये क्वेश्चन तुम लोगों के डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन के लिए, तो हम उसको नोट डाउन करके रखे हुए थे, तो उस क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। तो इफ द वेट ऑफ 65 टी पैकेट्स, 65 टी पैकेट्स, फिर बता रहे हैं if the weight of 65 tea packets of the same size is 26 kg, then what is the weight of 25 such packets? What is the weight of 25 such packets? तो 25 पैकेट्स का वेट कितना होगा, इसको हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? तो बड़ी सिंपल तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं, किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं? तो देखो यहाँ पर हम लोग को फिर से पहले समझना है कि क्वेश्चन
डायरेक्ट वेरिएशन के लिए है कि इनवर्स वेरिएशन के लिए है? तो देखो बोला जा रहा है कि इफ 65 टी पैकेट्स ऑफ सेम साइज इज वेट टू बी 26 केजी, 65 पैकेट्स का वजन 26 केजी होता है, तो 25 पैकेट्स का वजन कितना होगा? तो ऑब्वियस सी बात है, ये दिखा रहा है डायरेक्ट वेरिएशन। क्यों डायरेक्ट वेरिएशन दिखा रहा है? सिंपल सा लॉजिक है। अगर सपोज मान लेते हैं एक पैकेट का वेट 2 केजी है, सो 2 पैकेट का वेट कितना होगा? 4 केजीज। सिमिलरली 3 पैकेट्स का वेट कितना होगा? 6 केजीज। 4 पैकेट्स का 8 केजी, एंड सो ऑन एंड ऑन. So we need to identify that what the question wants to ask. Then we will go for the solution. तो यहां पर हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे? According to the question, 65 tea packets weight 26 kg. Therefore, one tea packet weights how much? That would be 26 by 65 kg. Okay. Now, हम लोगों को कितने के निकालने हैं? 25 पैकेट्स. So therefore, 25 such tea packets will be weight to how much? 26 by 65 into 25. Now you can just cancel the values. तुम यहाँ पर इन values को cancel कर सकते हो. तो 5 से ये cancel हो जाएगी 5 times में, और 5 से ये cancel हो जाएगा 13 times में. And then by 13 you can cancel further. 13 से इसको cancel किया जा सकता है 2 times में. So then your final answer going to be 10 kgs. So you will get the answer as 10 kg. So 10 kg will be the weight of 25 such packets. Okay, so 25 packets का वजन कितना हो जाएगा? As you will get 10 kg. तो ये हम लोग निकालना है. ठीक है. इसी तरह के और भी क्वेश्चन होंगे. इसी तरह से और भी कई सारे तरह के क्वेश्चन होते हैं. एक और क्वेश्चन जो बहुत कॉमनली बुक्स में होता है और डायरेक्ट इनवर्स प्रोपोर्शन में एग्जाम्स में भी पूछा जाता है. Let's see for that particular question, that how we can solve for that kind of question. ठीक है. तो suppose for example ये दिया गया है कि there are typewriters. Okay, I hope you all had seen typewriters. Now it's not so very common, but it's still in some government works, typewriters are very compulsory because typing has to be done over there. So if you had seen, it's very good. If you haven't seen a typewriter, then you can ask your parents. They must have seen the typewriter. It was a kind of a keyboard with a printing component. Okay, so whatever you will type over there, it will be easily printed over there. तो तुम लोगों ने अगर देखा है तो बहुत अच्छी बात है. नहीं देखा है तो I hope that you will find it out somewhere. So एक क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है. ठीक है, उससे किस तरह से क्वेश्चन बन सकता है या फिर किस तरह से आ सकता है. तो ये क्वेश्चन दिया गया है कि there were 14 typewriters. Okay, or typists were there. So typists were there and they were typing for 6 hours a day. Okay, so they were typing for 6 hours a day for to type a book or something like that. Okay, and they can finish out the work in 12 days. तो जब वो लोग 14 टाइपिस्ट 6 घंटे एक दिन के लिए काम करते हैं, तो वो 12 दिनों में वो अपने पूरे काम को कंप्लीट कर लेते हैं. ठीक है, फिर से हम रिपीट कर रहे हैं. ध्यान से समझो, क्वेश्चन को समझो. And I hope that the question will be there in your book also, this kind of. So it is given that 14 typewriters are there and they were working 6 hours a day and they can finish out the work in 12 days. 14 टाइपिस्ट 6 घंटे प्रतिदिन काम करके
12 दिनों में एक काम को पूरा कर देते हैं। Now, if it has been asked to you that if only 4 typists were there, only 4 typists are there, and they have to finish the work, and for that one they will get 7 hours a day work. Okay, so in a day they need to do 7 hours work. Then in how many days? Then in how many days the work is going to finish? Instead of 14, only 4 typewriters will work. Instead of working for 6 hours a day, they have to work for 6 hours a day. Then in 7 hours a day. Then in how many days they are going to finish out the whole work? तो वो कितने दिनों में वो पूरा काम पूरा कर सकते हैं? तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं? किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं? Let's see and understand for that one. See, this is again an inverse proportional, inverse variation question. यहाँ पे inverse variation के साथ हम लोगों का क्वेश्चन चल रहा है, क्योंकि हम लोगों को पता है कि जैसे जैसे टाइपराइटर्स के नंबर घटेंगे या फिर उनका काम करने का टाइम घटेगा या बढ़ेगा, वैसे वैसे डेज के नंबर भी घटेंगे या बढ़ेंगे. ओके, सो हाउ कैन वी सॉल्व दिस वन? लेट्स सी इन अ वेरी सिंपल वे. देखो, स्टेटमेंट बनाना बहुत आसान, बहुत ध्यान से बनाना है. अगर स्टेटमेंट ध्यान से बना लोगे, then you will be able to do the work in a very good way. Okay, so as according to the question, it has been given that a piece of work can be finished by 14 typists by working 6 hours a day. By working 6 hours a day, can finish the work in 12 days. Okay, so therefore if only one typist has to do the work, if only one typist has to do the work, has to finish the work, then how many days that person will take? Okay, so if one typist is working for the same period of time, 6 hours a day, you can write over here 6 hours a day, then he can finish the work in how many days? That would be 14 into 12. First of all, you have to go for this one. Now, as the time has also changed over here, so we will not go for the 6 hours. We will go for 1 hour. Again, so if only one typist has to finish the work if he is doing for 1 hour, if he is doing 1 hour a day, ओके, अगर वो उसको एक ही घंटे उसको हर रोज काम करने को मिलता है, तो वो कितने दिनों में काम पूरा करेगा? दैट वुड बी 14 into 12 into 6, यानी इतने दिन लग जाएंगे उसको काम करने के लिए. व्हाई इट इज सो? ध्यान से देखो, 12 टाइपिस्ट का काम एक ही को करना पड़ रहा है, सॉरी 14 टाइपिस्ट का काम एक ही को करना पड़ रहा है. जहां पे 12 दिन लगते, अब ज्यादा दिन लगने वाली है. और 6 घंटे एक दिन में काम कर रहे थे, वो नहीं, अब बस एक ही घंटे काम कर रहे हैं, तो और ज्यादा टाइम लगने वाला है. सो दिस इज द टोटल डेज विच इज गोइंग टू टेक टू फिनिश द होल वर्क. इतना टाइम लगने वाला है उस पूरे काम को करने के लिए. नाउ एज द क्वेश्चन इज आस्किंग that only 4 typists has to work for 7 hours, then in how many days it is going to finish out? So just go for it. Therefore, if 4 typists, okay, so you just write it like this. 1 minute, please. Let me just erase this one. Yeah. So, okay, here. So therefore, if 4 typists has to work for 7 hours a day,
then it will be finished. It will be finished in how many days? So that would be 14 into 12 into 6 by 4 into 7. Now you just need to simplify for this one. I'm just taking this equation over here. So यहाँ पर अगर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा? 14 into 12 into 6 by 4 into 7. With 7 we can cancel this one for 2 times. 4 we can cancel this 12 for 3 times. So 6 into 6, that is 36. So in 36 days, it will take 36 days to finish the whole work. तो 36 days लग जाएंगे पूरे के पूरे काम को कंप्लीट करने के लिए. Have you all understood this thing? Is there any confusion? Do anyone is having any confusion over here? No? Okay. Okay. So in the same way, there would be many kinds of other questions also. Yes, Astha, बोलो क्या problem है? सर वो जो क्वेश्चन में अगर हो कि मतलब क्वेश्चन में कैसे पता करेंगे कि ये मतलब ये इनवर्स वेरिएशन है या डायरेक्ट? हाँ, ये चीज हम स्टार्टिंग में बता रहे थे ना कि देखो तुमको ये चीज समझना है, क्वेश्चन पढ़ के तुमको ये चीज समझना है कि मेरे पास जो क्वांटिटीज दी हुई हैं, क्या मेरा एलएचएस के बढ़ने पर मेरा आरएचएस भी बढ़ रहा है, या क्या मेरे एलएचएस के घटने पर क्या मेरा आरएचएस का वैल्यू भी घट रहा है? अगर ऐसा होता है तब उसको हम लोग डायरेक्ट वेरिएशन कहते हैं. जैसे कि एक चीज का कॉस्ट अगर 10 रुपया हो तो ऑब्वियसली दो चीजों का कॉस्ट 20 होगा, फिर उसी तरह से 3 का कॉस्ट 30 होगा, तो 5 का कॉस्ट 50 होगा. तो अगर ऐसा कुछ सिचुएशन अगर हमको देखने को मिलता है तो उसको हम लोग कहते हैं डायरेक्ट वेरिएशन. मोस्टली ये कॉस्ट वाला जो क्वेश्चन रहेगा उसमें यही लॉजिक लगा हुआ रहेगा. ठीक है. और अगर हमको टाइम और वर्क के साथ कुछ रिलेट करता हुआ दे, से एज फॉर एग्जांपल ये बोला गया हो कि एक घर में जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हारे घर में जो खाने का स्टॉक होता है वो सर्टेन अमाउंट में होता है. सपोज फॉर एग्जांपल तुम्हारे घर के फैमिली मेंबर्स 5 फैमिली मेंबर्स है. 5 फैमिली मेंबर्स के लिए फूड का स्टॉक 20 डेज के लिए है. 20 डेज के लिए है. ठीक है. लेकिन ये बोला गया कि सडन वहां पे कोई एक फैमिली मेंबर कहीं पर घूमने चले गए. कोई एक फैमिली मेंबर कहीं घूमने चले गए. ठीक है. तो वही खाने का स्टॉक, सेम खाने का स्टॉक, क्या वो 20 डेज जाएगा या उससे ज्यादा जाएगा या उससे कम जाएगा? बताओ तो आस्था. हैव यू अंडरस्टूड? कम जाएगा या ज्यादा जाएगा? सर ज्यादा जाएगा ना, क्योंकि अगर एक आदमी अगर कम हो गया है तो खाना कम खर्च होगा, तो वो ज्यादा जाएगा. तो देखो एक साइड मेरा एलएचएस डिक्रीज होने के साथ साथ मेरा आरएचएस इंक्रीज हो गया था. तो इस सिचुएशन में हम लोग क्या देखते हैं? ये इनवर्स प्रोपोर्शन होगा. ठीक है. तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग? इसको सॉल्व भी कैसे करेंगे? अभी भी जैसे कि बता रहे थे कि अगर 5 लोगों का खाना 20 दिनों तक चलता है तो एक आदमी का खाना कितने दिनों तक चलेगा? दैट वुड बी 5 into 20. सो अब एक आदमी चला गया तो टोटल कितने लोगों का खाना है? सो 4. तो 4 लोगों के लिए वो खाना कितने दिनों तक जाएगा? तो 5 into 20 डिवाइडेड बाय 4. तो इससे ये 5 डिवाइड मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पर ये 25 डेज. तो जो खाना पहले सिर्फ 20 दिनों तक चल सकता था वो अब कितने दिनों तक जाएगा? इट इज गोइंग टू बी देयर फॉर 25 days. Okay, so this would be the condition over here. Have you got it? Now have you understood this thing? Yes sir. Yes. Okay. Do anyone is having any other doubt? Do anyone is having any other doubt? Because our class is going to finish in just 2 minutes. So if anyone is having any problem or any doubt in understanding the whole concept, then you can ask. Yes.
अलग अलग तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं, जैसे कि कुछ क्वेश्चन हो सकता है वेजेस को लेते हुए, कुछ क्वेश्चन हो सकता है ये खाने का स्टॉक को लेते हुए। तो अलग अलग तरह के क्वेश्चंस हो सकते हैं। सो यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड, यू जस्ट नीड टू फोकस on the kind of question what has been asked, and according to that you need to choose the method by which you can solve it out. Okay, have you all understood this thing? Yes or no? Yes, I'm not getting anything. Yes. Yes. Okay. Then if there is no doubt for now, then I will end up the class over here only for today, and we will meet again tomorrow. And if you have any kind of doubt or any kind of problem, you please find it out and we will discuss in tomorrow's class. Okay. So bye for now. Thank you, everyone. Good night.